Hello everyone. In this lecture, we will discuss our next assignment, that means assignment number 3, which is related to module 4, which is force analysis. In this assignment, our first question is we have to define axial force, shear force, bending moment and neutral axis. Neutral axis we will discuss later on because these three axial axis, shear force and bending moment are related to each other. Okay, so as in this slide we can see that the force acting along the geometric axis of the beam is called axial force. The force acting parallel to its cross-sectional plane is called shear force, while the moment or couple acting at this section is bending moment. They maintain the horizontal force, means Fx is equal to 0, vertical force means summation of Fy is equal to 0, and moment equilibrium, that means summation of M is equal to 0 of the beam segment at the relevant cross section, and are therefore calculated by considering the three equilibrium equation at the state. इसको हम लोग और अच्छी तरह से समझ सकते हैं बाय कंसिडरिंग द बीम. ओके, बाय कंसिडरिंग द बीम मीन्स हैविंग द लेंथ much greater than or minimum 3 times greater than to its other cross sectional area is called beam. Okay, or in this slide the shear force and bending moment is discussed in more expanded way, which is shear force at a section in a beam is the force that is trying to shear off this section and is obtained as the algebraic sum of all the forces including the reactions acting normal to the axis of the beam either to the left or to the right of the section. And bending moment of the section is a beam is the moment that is trying to bend it and is obtained as the algebraic sum of the moment about the section of all the forces. So, or in the next slide means in this slide suppose AB is a beam. यहाँ से हम लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं. तो AB के along जो फोर्स लगता है that is called axial force. Okay, shear off means suppose यहाँ पर दिख रहा है डायग्राम कि 7 किलो न्यूटन अपवर्ड लग रहा है और 7 किलोमीटर डाउनवर्ड लग रहा है. दैट इज रीज़न कि दोनों इक्वल फोर्स है. यही रीज़न है कि ये शेयर ऑफ नहीं हो रहा है. एंड इन द नेक्स्ट लास्ट वन डायग्राम बेंडिंग मोमेंट इसके नाम से ही क्लियर है. बेंडिंग मतलब बेंड हो जाना, कितना वो बेंड नहीं हो पा रहा है, कितना हो रहा है. सो और जैसे कि हम लोग इसमें डिफाइन भी किए कि बेंडिंग मोमेंट दैट इज ट्राइंग टू बेंड इट. ओके, बेंडिंग मोमेंट दैट इज ट्राई टू बेंड इट. और शेयर ऑफ फोर्स मतलब ट्राई टू शेयर ऑफ. सो दिस इज द शेयर ऑफ फोर्स. और जो शेयर ऑफ फोर्स होगा ऑफ कोर्स जो कि हम लोग फर्स्ट स्लाइड में देख लिए कि ये क्रॉस सेक्शनल एरिया के पैरेलल लगेगा. एक्सियल फोर्स मतलब चूंकि ये ए और बी के अलॉन्ग लग रहा है, लेंथ के अलॉन्ग लग रहा है, इसलिए ऑफ कोर्स ये क्या होगा, इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के परपेंडिकुलर होगा. और ये शेयर ऑफ फोर्स होगा पहला. एंड दिस इज द एक्सियल force is perpendicular and this is okay. So now it is also important to know about the sign because shear force is a vector quantity and bending moment is also a vector quantity. तो ये हम लोग को बहुत ज़रूरी है जानना कि इसका साइन कन्वेंशन क्या होगा. अगर हम लोग शेयर ऑफ कर रहे हैं, शेयर फोर्स लगा रहे हैं, वो शेयर ऑफ हो जा रहा है. यहाँ पर दिख रहा है 2 सेक्शन 2 पार्ट में बट गया है बीम. तो अगर लेफ्ट वाला पोर्शन राइट वाले पोर्शन के कंपेरेबल अप डायरेक्शन में होगा देन दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव शेयर and in shear force, and in next slide it is a negative. Similarly in case of the bending moment. And our last question is we have to derive the relation between load intensity and shear force
and bending moment. We have to derive the relation between the load intensity, shear force and bending moment. Actually it will be dm by dx is equal to माइनस एफ. इसके लिए हम लोग एक बीम कंसिडर कर रहे हैं. उस बीम पे सपोज कि लोड डिस्ट्रीब्यूटेड है जो एरो से दिख रहा है हम लोगों का, और एक एक्स डिस्टेंस पे एक स्मॉल हम लोग लेंथ कंसिडर कर रहे हैं डेल एक्स. नीचे के डायग्राम में दिखाया गया है पॉजिटिव पॉजिटिव सेंसेस ऑफ shear force. SF means shear force and the last figure is the enlarged view of the element. Okay, so the intensity of loading on elemental length may be taken as constant. Considering the vertical equilibrium of force, we get F plus delta F minus W delta X is equal to 0, or del F by del X is equal to W. Similarly, this we can write for the moment, and finally we have the expression this. So okay, thank you.